Welcome to all once again in your favorite English classroom, the Excellence Learner. And today we are here to discuss a poem, The Solitary Rapper. Solitary Rapper is a poem written by William Wordsworth. बच्चों आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बार फिर से एक नई कविता सॉल्ट्री रैपर के साथ और इस सॉल्ट्री रैपर के जो रचनाकार हैं द पोएट ऑफ द पोएम इज विलियम वर्ड्सवर्थ राइट। हमें पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. He was particularly the poet of romantic revival. In fact, it was William Wordsworth who started a new epoch, a new cult of English poetry that's name was Romantic period, and he was the representative poet of this particular period. Correct? ऐसा कहा जाता है, it is said that during the near about the year 1803, William Wordsworth was in Scotland. It was his native place as well. And that time he caught an inspiration, an idea to compose this famous poetry, the Solitary Rapper. Right? And first time this poem was published in year 1807, means 1807 was the year when first time this famous poem was published. So today we will discuss step by step, line by line of this poem, right? So before going into the poem, we must in fact discuss and got an outline idea regarding the background of this poem. What is the poem and what the poem tells about, right? In this poem, the poet tries but fails to describe the meaning of the song. In fact, though the poet fails to define the meaning but get an idea, and actually in this poem the poet could not get the definite idea and meaning of the poetry, but yes, he succeed to give the definition of poetry. In fact, actually Wordsworth used to say that poetry is the spontaneous flow of power of feelings. Yes, in this poem we get the tinge of this quotation, the definition of the poem throughout the poem from start to the last. ओके, तो कविता के शुरू से लेकर अंत तक कविता के बारे में जो वर्ड्सवर्थ की अपनी धारणा थी कि पोएम द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावर ऑफ फीलिंग, यह हमें जरूर महसूस होती है, भले ही कविता का मीनिंग पोएट को समझ में नहीं आई, पोएट नहीं समझ पाए. द पोएम इज द फॉर्म ऑफ ए बैलेट. पता है कि बैलेट किसे कहा जाता है? नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूं. Ballad, it is a form of poem. It is a form of a narrative poem, in fact, जिसमें कि कुछ कहा जाता है और प्रायः इस तरह की जो कविताएं होती हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर कभी को एक्सपेक्ट नहीं होता, इसे कहते हैं rhetorical question. So this ballad is full of rhetorical question, and rhetorical is a type of figure of speech also. तो यह कविता अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है वर्ड्सवर्थ की. चलिए इस कविता का पहले मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं. उसके बाद इस कविता में जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है
मैं उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? चलिए चलते हैं। Behold her singing in the field, yon solitary highland lass, rapping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. Right? Behold her. Behold means देखो, to see. See her single in the field. कविता का जो शीर्षक है, the heading of the poem is the solitary rapper. Solitary means single, alone. Rapper means one who raps, one who cuts. तो अकेली काटने वाले की कविता है यह। कवि ने स्टार्टिंग लाइन में ही हमसे कहा बिहोल्ड हर, देखो उसे। कौन? इसको? सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर, शी इज ए गर्ल इन फैक्ट, एंड शी इज सिंगल इन द फील्ड, शी इज अलोन इन द फील्ड। योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, राइट? योन मीन्स देयर, वहां, कहा? उस सॉलिटरी फील्ड में देखो एक अकेली हाईलैंडलेस मतलब पहाड़ी लड़की को। लेस मीन्स लड़की, हाईलैंड मतलब पहाड़ पर, वह लड़की जो पहाड़ पर रहती है, पहाड़ी लड़की। कवि कह रहा है कि देखो अकेली फील्ड में उस पहाड़ी लड़की को, रैपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, काट भी रही है और गा रही है बाय हरसेल्फ। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेज वी नो, मीन्स ऑल अलोन, अपने लिए, वो अपने मन में ही अपने लिए गा रही है, क्योंकि शी इज नॉट कंपेल टू make listen to anyone, she is singing by herself, right? Stop here or gently pass. What does poet want to say with the help of this word? क्या कह रहे हैं कवि हमसे? कवि का कहना है स्टॉप हियर और जेंटली पास। एक्चुअली आफ्टर लिसनिंग द सो स्वीट टोन ऑफ द सॉन्ग, द पोएट वाज टोटली स्पेलबाउंड. He was mesmerized, in fact. That's why he doesn't want to break the flow of the music. So he says to us, the reader or other who passes through the path, he says, he requests, in fact, stop here. Means enjoy this song. Or if you don't have any interest in the song, just pass gently, pass slowly, so that the girl who is singing over there should not be disturbed, because I am myself enjoying the song. So please do not try to disturb my enjoyment. Do not try to disturb the girl, in fact. And if you don't have any interest with the song, just pass away, just move slowly. Or if you have really interest, stop here to enjoy the music. Alone she cuts and binds the grain. यहां पर हम देख रहे हैं cuts and binds. The two totally opposite words have been used here, right? And this type of words, this type of, इस तरह का जो प्रयोग होता है, this type of uses of the word in fact are called apostrophe, जहां पर दो भिन्न भिन्न गुणों के शब्दों को एक साथ कभी प्रयुक्त करता है. So alone she cuts and binds the grain. वो क्या कर रहा है? अकेले काट रहा है और बांध भी रहा है. And sing a melancholy strain. Melancholy means full of sorrow, full of pain. कैसा वह, किस तरह का वह गान गा रही है? जिस गाने में दर्द दिखाई पड़ रहा है, sorrow दिखाई पड़ रहा है. Oh, listen for the well profound.
ओ लिसन, यहां पर कह रहा है हम पाठकों को, हम रीडर को, लिसन क्या, द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स वैली, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वैली, एंड प्रोफाउंड मीन्स डीप, इस गहरी घाटी में is overflowing with the sound. The entire valley is overflowing with the sound of the girl, right? So it is the sum total meaning of the very first stanza. In the first stanza, the poet asks us, requests us, or commands us to see a single girl in the field who is rapping and singing. The poet is so spellbound and totally charmed with the beauty of the song that he suggests the other either stop or pass away gently so that the girl, the singing girl, in fact, should not be disturbed. Right? ओ लिसन फॉर द वेल परफॉर्म, यहां ओ लिसन का इस तरह का जो प्रयोग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं. एपोस्ट्रॉफी मीन्स जब कवि ऐसे आदमी से बात करना चाहता है तो या तो जिंदा नहीं है या वहां पर है नहीं. राइट, आगे, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स or travelers in some shady haunts among Arabian sands, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the sea among the farthest heartbeats. यहाँ पर कभी उसकी आवाज को, उस लड़की जो गाने वाली लड़की है उसकी आवाज की बड़ाई करते हुए कहता है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, इस तरह की आवाज किसी बुलबुल में नहीं रही होगी. यह बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग, जैसे हिंदी में हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में से हम हाइपरबोले बोलते हैं. तो यहाँ पर हाइपरबोले का यूज हुआ है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt from Arabian sands. Arabian, अरब एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जहां की केवल रेगिस्तान ही ज्यादा है ना. तो वहां से लोग जब चलते हैं और चलते चलते जब वो स्कॉटलैंड के ग्रासलैंड में पहुंचते थे तो उनका स्वागत करने के लिए जो पक्षियों का गान होता था, ऐसा महसूस होता है कवि को, उस तरह उससे भी कहीं अधिक आरामदायक, उससे भी कहीं अधिक वेलकम सॉन्ग इस लड़की का है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, वेरी मतलब थका हुआ, वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर, बैंड्स मीन ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर इन सम शैडी हंट, शैडी हंट मतलब जब ट्रेवल करके वह रेगिस्तान से इस ग्रासलैंड में आते थे तो उनको जो शेड मिलता था अरेबियन सैंड से बाहर आने के बाद, तो उनको जो कुक्कू की आवाज सुनकर जो एक तरह की थ्रिलिंग महसूस होती थी, उस थ्रिलिंग से भी कहीं अच्छी है इस सॉलिटरी रैपर की आवाज. दिस इज द हाइपरबोल ऑफ द पोएट. पोएट यहाँ पर इतनी बड़ा है, इतनी उसकी आवाज की जादू में फंस चुके हैं, ही इज सो स्पेलबाउंड with the song of this girl that he has no hesitation to say that in his point of view the voice of girl is more sweeter than nightingale or a cuckoo, and he is getting more comfort than the Arabian bands who could have felt comforts after reaching the shade of this grassland of Scotland. Right? Breaking the silence of sea among the farthest Heartbreak. Heartbreak, it is a small island of the Scotland, जहां की शांति काफी महसूस होती होगी कवि को. इस जगह की बात को कहते हुए कवि कह रहे हैं कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारदेस्ट हार्टब्रेक्स, इसकी आवाज जो है वो समुद्र की शांति को भी तोड़ रही है. इट इज अगेन ए विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कवि. यह क्या है? कंट्राडिक्शन है.
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटीथेसिस, इट इज एन एंटीथेसिस। सी साइलेंस नहीं होता, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारदेस्ट हार्टबीट्स, उस दूर द्वीप में समुद्र की शांति को भंग करने वाली ये आवाज है किसकी? इस लड़की की। सो इन द सेकेंड पैराग्राफ, इन द सेकेंड स्टेंजा, इन फैक्ट द पोएट हैज exaggerated the impact of the song of this girl, right? Entire hyperbole is used here. Again, will no one tell me what she sings? मैंने कहा था यह एक बैलेड है जो रेथोट्रिकल बैलेड है, इसमें क्वेश्चन करते हैं कभी। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for old, unhappy, far off things and battle long ago, or it's some more humble day, familiar matter today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. The poet asks the questions, right? And the question asked in such a way that he does not expect answer from our end. इस तरह का जो एक पोएट्रिक डिवाइस का यूज किया जाता है पोएम में, दैट इज कॉल्ड rhetorical question, right? So poet asks the question, in fact really he or she asks the question but without the expectation of answer. So in the again these lines, poet himself trying to give the answer. He asks to us, anyone will give me the answer what she thinks about? But again he make some assumptions, try to find out the answer. He says, perhaps it's the plenty number of flow or numbers flow. Plenty means sorrow. Numbers means poem. He says that this song, this poem may be the part of some sorrowful event, some old sorrowful unhappy event that has been past. Or again, he hopes, again he dreams, again he tries to guess, in fact, is it some more humble, familiar matter of today? He says that either it is the matter of far off day that has been past, and it may be the full of sorrow, plenty numbers, right? Or it is the familiar matter, day to day matter of this girl that is also natural sorrow, loss, or pain. That has been and maybe again he guessed that this is the a routine type of sorrowful event that happens with the girl. He guesses more than one, but actually fails to get the correct answer, correct theme of the poem, right? Again, he says, whatever the theme, the maiden song, as if the song could have no end. I saw her singing at her work, and over the cycle bending, I listened, motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was here no more. Whatever the thing, in that particular stanza, the poet tries his best to find out the answer and meaning of the question, but ultimately he fails. So he consoles himself. अपने आप को वो सांत्वना दे रहे हैं. Whatever the theme, चाहे कुछ भी इसका थीम क्यों ना रहा हो किसका? The maiden song. Maiden means the lady that is not get married till now. जिसकी अब तक शादी नहीं हुई हो. तो वट एवर द थिंग द मैडन सॉन्ग, वह जो लड़की गा रही है उसका जो कुछ भी मीनिंग हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, बट ही थिंक्स दैट इट सीम्स टू हिम दैट द इट इज एन एवर लास्टिंग सॉन्ग, यह कभी खत्म नहीं होने वाली गीत है. क्यों? आई शॉ हर सिंगिंग एट हर वर्ड, मैंने उसे काम करते हुए देखा. एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, सिकल मीन्स this is a
हार्वेस्टिंग टूल, फसल काटने का यह एक साधन है, हथियार है ना, जिससे कि फसल काटा जाता है। ओवर द सैकल बेंडिंग, झुके हुए सैकल सेकल पर मैंने उसे देखा। आई लिसन्ड, मैंने सुना। motionless and still. That time when the song was entering, when the song was making room within my heart, I totally lost my motion. I was still, and as I mounted over the hill, and slowly, when I mounted over the hill, because that time at the very first stanza, he says he was in the well valley, right? Profound well, he says. So when he passed from this place, when we mounted over the hill, that time also the song, the music, the tone of the girl was echoing within her heart and his ear, right? The music my heart I bore long after it was here no more. The music that he come across on the path in the valley was long lasting. It was made permanent place within his heart, right? So this is the sum total meaning of this poem. That was very famous poem of Mr. William Wordsworth. Still, I believe more than 300 years nearly about has gone, but still we are enjoying this poem. Now it is time to discuss some literary device. हालांकि मैंने पोएम के एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में ही आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताता आया। तो पहला जैसे मैंने कहा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी मीन्स जिसमें कि लेखक कभी बात करता है हमसे, ऐसे व्यक्ति से जो कि जिंदा ना हो या वहां पर मौजूद ना हो। जैसे देखिए, behold her, he is talking to us, right? This is an example of apostrophe, right? इसके बाद कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का भी कभी ने यूज किया है। कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटेटिव साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इन द नियर अबाउट वर्ड्स, राइट? फिर एंसोनेंस का भी यूज किया है कभी ने, जहां पर वॉवेल का यूज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे हाल, सिंगल, फिर यहां पर ई का रिपीटेशन हो रहा है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉवेल का यूज हुआ। उसके बाद हाइपरबोले का यूज हुआ है। हाइपरबोल जिसके को बढ़ा चढ़ाकर कभी कहता है, जैसे कि आपने देखा, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, दिस इज जस्ट एन एक्सगरेशन, राइट? एंटीथेसिस का भी काम हुआ है, इसमें यूज हुआ है, जहां पर दो परस्पर विरोधाभासी शब्दों का यूज प्रयोग करता है कि कट्स एंड बाइंड्स, एक साथ ही काटना और बांधना, दो भिन्न भिन्न शब्दों का यूज हुआ है, राइट? और alliteration, alliteration means repetitive of the same type of words. No nightingale, है ना? alliteration, no nightingale, n और n का यूज आपने देखा है। तो यह इस तरीके का पूरा कवि ने यूज किया है अपने फिगर ऑफ स्पीच का। मुझे पक्का विश्वास है कि यह पोएम अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ इट इज योर टर्न, my students, my fellow, just to go ahead and like and subscribe my channels, because you know your response really works like a tonic for me, and I make myself able to present all your study related materials with some unique and fantastic way, right? So that's end of the day. Bye bye.